Good morning, all of you. Good morning. Welcome to the SOS show. SOS means Science on Sphere. Okay? मुझे ये बताओ, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं. उनमें से हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? देखेंगे हमारे प्लैनेट्स के बारे में. ओके? तो मिल्की वे गैलेक्सी. आपको पता है व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टेलेशन? Very good. The group of stars, definite pattern or shape in the sky, that is called as constellation. हिंदी में कहते हैं उसको तारामंडल. स्टार अपना एक ग्रुप बनाता है आसमान में, उसको कहते हैं तारामंडल. ओके? तो टोटल कितने कॉन्स्टेलेशंस होते हैं? 18 पे टोटल कॉन्स्टेलेशंस होते हैं 88. ओके? तो कौन सा आप कोई एग्जांपल दे पाओगे? कौन सा कॉन्स्टेलेशन नाम? सप्तऋषि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. ये ग्रुप वाला नहीं, हाँ अभी 10 मिनट में खत्म करो. जल्दी कर दी है. तो फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? सन देखेंगे पहले. दिस इज सन. किसी को पता है सन के बारे में? कोई बता पाएगा? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सन. क्या सन स्टार है या प्लैनेट है? स्टार है. तो ये बताओ सन को लकी स्टार क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सर व्हाई सन लकी स्टार? सन को लकी स्टार क्यों कहा जाता है? उसकी एक स्पेशलिटी है. अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट प्लैनेट आएगा हमारा मरकरी. मरकरी का सबसे बड़ा प्लैनेट है? सॉरी छोटा मंटा छोटा. हाँ बताओ. वो सन के पास है फिर भी वो व्हाट इज प्लैनेट नहीं है. क्यों? बिकॉज़ इट ऑब्जर्व करता है वो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है उसकी. ये वीनस है. क्या वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? क्यों? ये सूरज के प्रति
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है दिन में और रात में समान होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा? इसको क्या कहा जाता है? ब्लू मार्बल भी है ना, ब्लू मार्बल। दिस इज अर्थ। अर्थ। इस अर्थ को ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा मार्स। दिस इज मार्स। ओके, इसके बारे में कोई पता है किसी को? रेड प्लैनेट। नेक्स्ट आएगा जुपिटर। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। ओके, नेक्स्ट सैटर्न। बताओ जवानी। दिस इज सैटर्न। इसके ऊपर रिंग है? नहीं दिखाई दे। दिख रही है, दिख रही है। सबसे कौन प्लैनेट है? मुझे ये बताओ, हमारे प्लैनेट से कितने थे पहले? 9 थे, अब 8 है। इनको हटाया गया, इसका नाम क्या है? ये मतलब प्लूटो को क्यों हटाया गया? इसकी ऑर्बिट अलग है बाकी प्लैनेट्स से, और डार्क प्लैनेट। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, हमारा कैरेक्टर इसमें चेंज होता है। चेंजिंग प्लैनेट एक वीडियो दिखाएंगे। अभी रुको, आपको एक 5 मिनट बस। चेंजिंग क्लाइमेट चेंजिंग होती है। हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होता है इसमें दिखाया है। For billions of years, an interaction between the ocean, land, and atmosphere has shaped our climate. A key part of this interaction is carbon dioxide, or CO2. In this view of Earth, we see carbon dioxide being absorbed through the seasons. The darker the green, the higher the concentration of CO2. When plants on land and phytoplankton in the ocean grow, they take in the CO2 and release oxygen. This process is called photosynthesis. When these carbon-rich plankton and plants die, they are buried deep in the ground and in the bottom of the ocean, taking CO2 with them. Over time, some of that buried carbon becomes fossil fuels. Coal, oil, and natural gas. Our use of fossil fuels has transformed modern life. In this view, yellow is for urban areas, red is for roads, blue is for shipping lanes, and green for air corridors. We rely on fossil fuels for nearly everything, from transportation to building to food production. Every time we burn these fossil fuels, we take carbon out of the ground and put it into the atmosphere. Our energy use is radically tipping the carbon balance. Data spanning the last 400,000 years show that carbon dioxide levels have fluctuated. But during that time, CO2 always remained below 300 parts per million. In the 1950s, CO2 levels started skyrocketing, and they will soar even higher if we continue business as usual. This rapid increase in CO2 is dramatically changing Earth's climate and ocean.
nation average temperature since 1940. CO2 is a heat-trapping gas that acts like a greenhouse, keeping the air inside warm and moist. Warmer global temperature threatens plant and animal life. Blooming and migration cycles are changing. Coral bleaching events are becoming a common occurrence, destroying coral reefs around the world. Diseases that flourish in warmer weather are spreading. Warmer global temperature fuels more powerful storms, hurricanes, typhoons, and blizzards. It also makes sea level rise, greatly increasing the damage caused by storm surges. More extreme weather, both flooding and droughts, are becoming commonplace. Habitats are changing for all species, including people. In the Arctic, sea ice is melting, permafrost is thawing. Entire villages are being destroyed by coastal erosion. Arctic cultures that have been here for thousands of years face a precarious future, as do we all. But we can confront that future by taking a look at the past. "40 years ago, our use of certain manufactured chemicals was destroying the protective ozone layer in Antarctica. The global community came together to face this complex threat. Nations agreed to ban these chemicals, and today ozone depletion has slowed. The ozone layer is expected to recover. Together we can confront the carbon crisis. We have changed the Earth's climate and ocean by our actions, yet our actions can stem the tide. We can each commit to using less energy and to using it more efficiently. The same human ingenuity that made the Industrial Revolution can launch a new revolution.